and today I'll discuss a worksheet on the concept of matter waves. So let's begin with the first question. The first question is de Broglie wavelength is. So de Broglie wavelength here is given by lambda is equals to h by p. H is the Planck's constant and p is the magnitude of the linear momentum. It can also be written as h divided by m into v. It can also be written as h divided by root 2 k into m, and it can also be written as h divided by root 2 qv into m. So here k is the kinetic energy, m is the mass, v is the speed, q is the charge, and v is the potential from which the charge has been accelerated. So these are all the possible relations, standard relations, which are concerned with de Broglie wavelength of a charged particle. So you can use that out. Now another questions are based on graphical analysis. The first is for constant speed, a graphical variation of lambda with the mass. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का मास के साथ वेरिएशन, द्रव्यमान के साथ वेरिएशन यहाँ पे दिखाया गया है. तो हम उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेमडा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी. तो हम कह सकते हैं अगर वी कांस्टेंट है, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. सो ग्राफ यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा गिवन बाय दिस कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें, सो लेमडा विल अगेन बी प्रोपोर्शनल टू 1/v. सो ग्राफ विल अगेन बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एशन है. इसके बाद अगर लेमडा वर्सेस 1/m का ग्राफ ड्रॉ करें, सो 1/m को आप x मान लीजिए. सो दैट मीन्स लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. सो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. अगर स्लोप एंगल थीटा है तो हम कह सकते हैं टेन थीटा होगा लेमडा अपॉन 1/m. तो सॉल्व करने के बाद टेन थीटा यहाँ से आपका h/v के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर लेमडा वर्सेस 1/v ग्राफ ड्रॉ करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा और टेन थीटा यहाँ से जो है आपका h/m के इक्वल आ जाएगा. तो ये ग्राफिकल एनालिसिस आप देख सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दैट अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज कैपिटल Q इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट. चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मास इज m. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होगा Q इंटू वी. तो ये तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. नेक्स्ट इसमें पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो क्यू वी जो काइनेटिक एनर्जी आए इसको आप हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, वी डैश मान लीजिए. तो यहाँ से वी डैश आपका रूट 2 क्यू वी बाई एम आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो लेमडा इज एच बाई एम वी डैश. यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये सॉल्व हो गया लेमडा बाई रूट 2 क्यू वी इंटू एम आ जाएगा. इसके बाद ग्राफिकल वेरिएशंस पे जाएँ. सो लेमडा वर्सेस पी का ग्राफिकल वेरिएशन देखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है. ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जबकि यहाँ पे अगर लेमडा वर्सेस 1/p का वेरिएशन देखें, 1/p को आप x मान लीजिए. सो लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू x. सो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. अगेन अगर हम लेमडा वर्सेस q की एनालिसिस देखें, सो लेमडा डिक्रीजेज इफ q इंक्रीजेज. सो इट हैज़ ए शेप लाइक ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. प्रॉपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलना इसको ठीक नहीं होगा क्योंकि इसकी इक्वेशन है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, बट इट हैज़ ए शेप like rectangular hyperbola will be the most precise name of this particular graph. Then we have variation of lambda versus 1 by root q. So take 1 by root q as x. I assume that all other terms are constant. So the graph will be a straight line over here. Next is lambda versus v. Potential. So lambda is proportional to 1 by root v. Again we have a shape like rectangular hyperbola. If graph is between lambda versus 1 by root v, that will be a straight line. There is a standard result that for an electron lambda is 12.27 by root v angstrom. So this has been obtained by substituting m and q value for the electron, which is 10 to the power minus 30 kg and 1.6 into 10 to the power minus 19. So these are the shortcuts to calculate lambda for electron, which is accelerated through potential difference v. Using this concept, we can say that lambda versus v will be having a shape like a rectangular hyperbola, whereas if we draw the graph between lambda versus 1 by root v, that will be a straight line, whereas lambda versus 1 by v graph will be a parabola. Trick here is take 1 by v as x. So 1 by here the concept is lambda proportional to root x. So the graph will be a parabola over here. So you have seen that we have discussed 18 questions in a video of less than 5 minutes. So the purpose behind these videos are to make your time and energy optimized as per problem solving skills are concerned. So we make sure that on any particular topic we cover every basic concept, basic relation and manipulation based question, manipulation mathematically as well as graphically, analysis of different graphical situations.
so that you can complete the entire spectrum, the entire questions, the entire concepts in a single video in a duration less than 5 minutes. So this is the purpose behind these worksheets based videos. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.